Hi viewers, a very good evening. You're watching Sansad TV and this is House Highlights with me, Rashika. We get you a detailed outlook of today's proceedings in both houses of the Parliament. Let's begin with the headlines. Lok Sabha takes up discussion on the problem of drug abuse under Rule 193. MPs appeal for strict measures to tackle the problem. Rajya Sabha holds discussion on the Appropriation Number 5 Bill and Appropriation Number 4 Bill 2022 for consideration and return. Chairman Jagdeep Dhankar expresses anguish over verbal duels between Treasury and the opposition benches, reminds members that Upper House is the platform for articulating the will of the people. Beginning with the Upper House, the Rajya Sabha on Tuesday held discussion on the Appropriation Number 5 Bill and the Appropriation Number 4 Bill 2022 for consideration and return. The appropriation bills authorize payment and appropriation of sums from and out of the Consolidated Fund of India. Participating in the discussion, Congress MP Dr. Ami Yagnik demanded more funds for the MSME sector. BJP's Arun Singh highlighted the government steps for the welfare of farmers and the poor. Dr. K. Keshav Rao of TRS said the collection of cess has increased manifold under the present government. Members cutting across party lines took part in the discussion. We have not recovered from the pandemic. If you look at the workforce, women who have lost their jobs, I also find it from the data of the corporate sector that it has become difficult for women to enter the workforce or re-enter the workforce in comparison to men. So this is also happening in Manrega sector. Madam Minister, I would just like to see that you give a little importance on this women aspect or gender budgeting as far as Manrega is concerned, and also look at the workforce for re-entry of women into the force. किसानों का बैंक अकाउंट खोलने के लिए देश के गरीबों का बैंक अकाउंट खुले 2014 के लाल किला प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बैंक के कर्मचारी, बैंक के अधिकारियों को आह्वान किया कि देश का विकास में फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूरी है, देश का गरीब भी उसके अंदर आना चाहिए। जब तक गरीब का विकास नहीं होगा, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं होगा, समावेशी विकास नहीं होगा, तो देश का विकास कैसे हो सकता है। वही बैंक का कर्मचारी, वही अधिकारी, केवल सोच बदली थी और नियत बदली थी और प्रधानमंत्री बदले थे और देखते देखते बैंक अकाउंट 22 करोड़ खुला। आज प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट 47 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खुला है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है मैम, जिसमें कहा गया है कि वन नेशन वन टैरिफ होना चाहिए। सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं और स्थिति यह है कि हमारे यहां जो पेंडिंग इश्यूज है, जो आपके समक्ष रख रहा हूं, आप रिजॉल्व कर सकती हैं। नॉन रिसिप्ट ऑफ ग्रांट फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल सिल्टेशन पॉलिसी इज पेंडिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई डैम इन कोसी रिवर इन नेपाल इज स्टिल पेंडिंग। एग्रीकल्चरल रिसर्च और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की एक्सपेंडिचर भी बहुत कम होते जा रहे हैं, वेयर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज द नीड ऑफ द आवर फॉर क्लाइमेट क्राइसिस मिटिगेशन। हमारे राज्य में भी सर गोविंद भोग चाल जो है, जो जीआई टैग भी है, उसके ऊपर भी 2022 पे 20% कस्टम्स ड्यूटी लगाए गए हैं। इसको भी अभी हटाना चाहिए। जनहित के लिए जब हमें पब्लिक सेक्टर के पास जाना पड़ेगा, हम पब्लिक सेक्टर के पास जाएंगे। जब हमें प्राइवेट सेक्टर के पास जाना पड़ेगा, हम प्राइवेट सेक्टर के पास जाएंगे। जब हमें दोनों के पास जाना पड़ेगा तो हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन की बात करें। जब इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म इस देश को 7 दशकों तक ग्रस्त कर रखा था, उस इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साहस के साथ इस देश को अलग किया है। I would say that the government is keen that the benefits of the growth and development reach every Indian household. There are schemes which are meant for the benefit of the less privileged, like the supply for the benefit of the poor, which started in COVID-19 pandemic, still continues. PM Garib Kalyan Yojana, 80 crore people of the country are benefited through this. Ruling and opposition members in Rajya Sabha on Tuesday sparred over certain remarks made by Congress President Mallikarjun Kharge in Rajasthan's Alwar.
However, leader of opposition and Congress President Mallikarjun Kharge refuted the charges made against him and said his political speech made outside the House must not be discussed on the floor of the House. मैं जो राजस्थान के अलवार में भारत जोड़ो जो सभा वहाँ पर आयोजित किया गया था सभा, उसमें ये आउटसाइड द हाउस है। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। Condemning the remarks made by Congress President during a political speech in Rajasthan's Alwar, leader of the House in Rajya Sabha, Piyush Goyal, demanded an apology from him. जिस प्रकार से खरगे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खरगे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। As protest continued, Chairman Jagdeep Dhankar expressed anguish over verbal duels between the Treasury and the opposition benches and asserted that the upper house is the platform for articulating the will of the people. Chairman maintained that he does not appreciate such unruly scenes and chaotic behavior in the House. I do not appreciate such unruly scenes and chaotic behavior in the House. This House, one second, this House, either side, is a platform of expression. This House has to reflect and take note everything that happens outside. This House is a very august House. Everything is spoken here carries great weight. Anyone who has to say anything should take recourse to rules. If you have a point to make, I have already indicated that there is a special category of leader of the House and leader of the opposition. And two of them represent their respective voices. Chairman Jagdeep Dhankar said that unruly conduct of the members gives 135 crore people of India a grave cause of concern. He reiterated that high standards have to be maintained on the floor of the House. He asserted that any allegation made on the House must be substantiated with documentary proof and must be laid on the table, and failure to do so will invite exemplary consequences. 135 करोड़ जनता हम पर हंस रही है। 135 करोड़ जनता आज के दिन चिंतित है, चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है कि क्या प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर, क्या हमारा ये स्तर हो गया है कि हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते? हो सकता है किसी के विचारों से कोई सहमत न हो सकता है आवेश में बाहर कोई बात कह दी गई हो सकता है बात का आधार हो निराधार हो सकता है बात के ऊपर दो मत हो, पर उसका मतलब यह नहीं है कि नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस, प्रतिपक्ष के नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस। ये टिट-फॉर-टैट है क्या? We are not children. So I would take very strong view of every member, and in last few working days, honorable members, I have seen two things. Very senior members, in spite of my direction, have failed to put the document on record. I give every member who was directed by me during the course of his speech, referring to a document or a video, a last opportunity is given during course of the day to make available that document on the table of the House. Any such failure will visit the member, and I can tell you, with exemplary consequences. In performing my constitutional duties, I will neither look at this side nor at this side. I will look only to the Constitution.
Chairman Jagdeep Dhankar on Tuesday disallowed notices under Rule 267 and clarified that if the occasion warrants, he will allow 267 every day, and if the occasion doesn't warrant such notice, that will not be allowed throughout his entire tenure. His assertion came after TMC member Derek O'Brien raised a point of order for Rule 267. If there is an occasion to invoke 267 every day, I would not hesitate to invoke it. And if there is no occasion to invoke it even once during my entire tenure, I would not. It will be examined on its own merits. 267 accepted every week. I agree with you. It can't be every week. Every month, I agree with you. It can't be every month. But 267 is a living rule which can be accepted twice or three times every year. Chairman Jagdeep Dhankar apprised the members on Tuesday that members V. Vijay Sai Reddy and P.T. Usha have been nominated to the panel of vice chairpersons. It is noteworthy that P.T. Usha is the first nominated member to be in the panel. According to rules, the chairman shall from time to time nominate from amongst the members of the council a panel of vice chairmen, any one of whom may preside over the council in the absence of the chairman and the deputy chairman, when so requested by the chairman or in his absence by the deputy chairman. Shri V. Vijay Sai Reddy and Shrimati P.T. Usha have been nominated on the panel of vice chairmen with effect from the 19th of December 2022. This is first time a nominated member of the House has been entrusted with this responsibility. Now moving to the lower house, today Lok Sabha proceedings were adjourned till 11:30 am amid heated exchanges between BJP and opposition members over certain remarks by Congress President Mallikarjun Kharge. Question hour could continue for less than 10 minutes. MOS Fagan Singh Kulaste responded to a question raised by RSP MP N.K. Premchandra regarding the impact of bifurcation in the release of central funds. Minister of State for Home Affairs Ajay Mishra Teni replied to a question related to cyber attack in AIIMS. I would like to know from the Honorable Minister, it is a demand-driven project. Whether the Finance Minister also last day replying to the SDG has stated in the Houses that there is no demand. Why there is no demand, there is no scheme? Because whether the government would consider cattle workers, traditional industrial workers within the purview of Manrega. Specific question, please answer, sir. अध्यक्ष महोदय, ये इसके लिए हमने कुल जो सृजित रोजगार हैं, जो मानव दिवस होते हैं, ऐसे 210 करोड़ रुपए हमने जारी किया है और कुल मिलाकर के जो धनराशि है 63,076.68 करोड़ रुपए और कुल पूरा अगर देखेंगे तो 68 लाख रुपए हमने जारी किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो इसके बारे में ध्यान देने की जरूरत, अगर वहाँ की डिमांड है उस डिमांड के आधार पर काम करते हैं और इसको मेंटेन करना ये उससे राज्य और वहाँ की जिले की जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार की ये व्यवस्था है, अगर नई व्यवस्था होगी तो जरूर हम इसके बारे में आगे काम करेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में सूचना और कंप्यूटर सिस्टम का एम्स द्वारा स्वयं प्रबंध किया जाता है। दिनांक 23/11/2022 को जब ये साइबर सुरक्षा की घटना हुई, उन्होंने हमको सूचना दिया। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन कार्रवाई टीम ने घटना का मूल्यांकन किया। प्रारंभिक विश्लेषण के अनुसार अनुचित नेटवर्क विभाजन के कारण अज्ञात खतरे वाले तत्वों द्वारा एम्स में जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क था उसके सर्वर में छेड़छाड़ की गई थी, जिसको अब ठीक कर लिया गया है और CERT इन और अन्य हितधारक संस्थाओं ने आवश्यक जो उसमें रेमेडी चाहिए उसके लिए उपायों की सलाह भी दी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने साइबर हमले की घटना के संबंध में कानून की संबंधित धाराओं के तहत दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ में प्राथमिकी संख्या 349/22 दर्ज कराई है, जिस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कानून के तहत जो उपलब्ध कानून साइबर क्राइम के लिए है उसके तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। Home Minister Amit Shah in Lok Sabha moved the bill to amend the Multi-State Cooperative Societies Act 2002 be referred to a joint committee of Parliament consisting of the 21 members of the lower house and 10 from Rajya Sabha.
The bill seeks to bring transparency and accountability in the sector. मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2000 का और संशोधन करने वाला विधेयक को सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें इस सभा के निम्नलिखित 21 सदस्य अर्थात श्री चंद्रप्रकाश जोशी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री परबतभाई सवाभाई पटेल, श्रीमती पूनमबेन हेमंतभाई माडम, श्री रामदास चंद्रभानजी तड़स, श्री अन्ना साहेब शंकर जोल्ले, डॉक्टर निशिकांत दुबे, श्रीमती सुनीता दुग्गल, श्री विजेंद्र सिंह, श्रीमती जसकौर मीना, श्री रामकृपाल यादव, श्री ढाल सिंह बिसेन, श्री सुरेश कोडिकुन्निल, श्री मनीष तिवारी, श्रीमती कनिमोजी करुणानिधि, श्री कल्याण बैनर्जी, श्री कृष्ण देवरायलु लाऊ, श्री हेमंत श्रीराम पाटिल, श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी, श्री चंद्रशेखर साहू, श्री गिरीश चंद्र और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे। संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के समस्त सदस्य संख्या का 1/3 होगी। समिति इस सभा को बजट सत्र 2023 के दूसरे भाग के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रतिवेदन देगी। अन्य प्रकरणों में संसदीय समिति के संबंध में इस सभा के प्रक्रिया संबंधित नियम, ऐसे परिवर्तनों, रूपभेदों जो अध्यक्ष जी करे, इसके साथ लागू होगी और यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्यसभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे। अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक को इस सभापति के रूप में नियुक्त करेगी। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 0 hour in the Lok Sabha witnessed issues including the Bihar Hoosh tragedy, the alleged religious conversion and the change in IRDAI regulations. JDU MP Rajiv Ranjan Singh questioned the NHRC probe into the Bihar Hoosh tragedy. BJP MP Ravi Shankar Prasad backed the probe, stating that the National Commission for Protection of Child Rights should also carry out a probe. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को, बिहार की सरकार को सूचना दिया है कि जो छपरा में जहरीले शराबों से जो मौत हुई है उसकी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार का कहां से मामला आ गया? जो संवैधानिक संस्थाएं, उन संस्थाओं का जिस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बिहार में 100 से अधिक लोग मरे हैं जहरीली शराब से, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और सर उनका विसरा नहीं रखा गया। तो सर मेरा आपसे कहना यह है कि इसके लिए मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर विषय बनता है। मानवाधिकार आयोग को जाना चाहिए, चाइल्ड आयोग को भी जाना चाहिए, क्योंकि मरने वाले बच्चे हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इसलिए बहुत गंभीर विषय है सर। Break under Rule 193, members discussed the problem of drug abuse in the country. Shiromani Akali Dal MP Harsimrat Kaur Badal led the discussion. She criticized the Congress and the AAP that is in power in Punjab for failing to check the spread of menace of drug abuse in the state. सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पंजाब के नशे के साथ, लिकर और नशे के साथ पंजाब खत्म हो रहा है और देश भी खत्म हो जाएगा। और सर इसमें सरकार को फटकार लगाई कि आपने पिछले 2 सालों में इन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 31,000 केस FIR दर्ज किए हैं और पता चलान कितने पेश किए? केवल 3 चलान पेश किए सर। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है कि इस हिसाब से देश का क्या रह जाएगा। आपस में सर इससे भी ज्यादा जो दुख की बात है कि आज हमारा देश
जो ड्रग्स स्मगल किए जाते हैं वो पूरे देश में नंबर 1 पोजीशन पंजाब में है ड्रग्स फॉर स्मगलिंग। तो आप ये देखिए कि ये ड्रग्स पूरे देश में जो सबसे ज्यादा राज्य जो फैला रहा है ये एनडीपीएस के उनके अपने ये डेटा है। NCP MP Supriya Sule said the drug menace should not be politicized and there must be a unanimous agreement to curb the menace. She also emphasized the need for spreading awareness about drug abuse in educational institutions. Net has become a big transaction point, and so darknet and cryptocurrency are biggest challenges that we are going to have. And access, there is huge access. Every government, whether it's there or ours, has always worked that making sure कि किसी school या college के सामने drugs ना मिले. That's all in today's bulletin. Keep watching Sansad TV for all Parliament updates. Good night.